Rheumatoid arthritis. Most frequent intrathoracic manifestation. Pleural disease. Female of West African descent. Erythema nodosum. Her calcium levels were elevated and her chest radiograph. Bilateral nodular pulmonary hyla. Diagnosis. Acute sarcoidosis. Chest radiograph. AIDS. Bilateral diffuse. Interstitial and airspace infiltrates with a symmetrical perihilar distribution. What? The CD4 count to be in cell/microliter? 150. Chest radiograph. Female with chronic lung disease. Hyperinflated lungs, patchy upper lobe consolidation and several 1 to 2 centimeters ring shadows in upper lobe distribution. Full blood count showed an eosinophilia. Diagnosis. Allergic bronchopulmonary aspergillosis. What additional finding would make a diagnosis of intralobar bronchopulmonary sequestration more likely than an extralobar type? Drainage via pulmonary veins. What feature on imaging would suggest primary rather than reactivated pulmonary tuberculosis? Nonspecific pneumonitis. What feature would make the diagnosis of extrinsic allergic alveolitis, EAA, less likely? Pleural effusion. HRCT. Uniform cysts throughout the lung with normal intervening lung. Diagnosis. Lymphangiomyomatosis. Lung metastases. Most likely primary tumor. Renal cell carcinoma. What would make non-Hodgkin's lymphoma more likely than Hodgkin's lymphoma? Incidence. CD4 count was 208 cells per CUMM. What AIDS-defining illness would be most likely with the CD4 count? Kaposi sarcoma. Easy. Less than 200 CD count तो ये है premises directly pneumonia. Ring shadows, ठीक है? So lungs have entered lungs. 1, 2, 3 and 3 meter ring shadows upper lobe. So eosinophilia तो ये endemic bronchopulmonary aspergillosis. Intra lower circulatory and drainage to pulmonary veins. जो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस में जो होता है एडनोपैथी होती है, फोका ट्यूबरकुलोसिस pneumonitis होती है, और सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस या रिएक्टिव ट्यूबरकुलोसिस में क्या होती है, मिलियन नोड्यूल्स होती है, कैविटेशन होती है, एब्सेंस ऑफ न्यूमोनियोपैथी होती है. ठीक है, ये भी आसान है. ये जो है ये फीमेल सिनेरियो में फीमेल है तो फीमेल में लिम्फेंजियोमेटोसिस होती है. ठीक है, और फिर यूनिफॉर्म सिस्ट होती है. Ill-defined metastasis during sarcoma. CD4 count 208 तो ये है Kaposi sarcoma. ठीक है, तो इससे severity less than 200 CD4 count होती है. What further findings would suggest a diagnosis of lymphangitis carcinomatosis rather than cardiogenic pulmonary edema? A nodular interlobular septal thickening. Chest radiograph. Multiple opacities between 0.5 and 2 millimeters in size, which were noted to be more dense than soft tissue. Diagnoses. Silicosis. What additional finding would be most compatible with a diagnosis of adult respiratory distress syndrome? Predominantly dependent abnormality. A full blood count showed a mild neutrophilia and a chest radiograph revealed significant elevation of the right hemidiaphragm. What is the most likely cause? Compression of the phrenic nerve by a tumor. School teacher. Non-productive cough, dyspnea and low-grade pyrexia. CXR. Several bilateral areas of patchy consolidation which were confirmed on HRCT and shown to be in a mainly subpleural distribution. In addition there is also patchy ground glass change and small, 5 mm, centrolobular nodules. Diagnosis. Cryptogenic organizing pneumonia. Chest radiograph and CT. Cough, fever, dyspnea, and chest pain. Renal impairment. Diagnosis. Wegener's granulomatosis. CT pulmonary angiogram, CTPA. The pulmonary arterial contrast opacification was suboptimal. The intravenous cannula is well sited and there is no overt sign of swelling around the cannula site. Most likely cause for the suboptimal opacification of the pulmonary vessels. Dilution of opacified blood with opacified blood. Chest radiograph. Subtle hazy opacification of the upper part of the lower zone of the right lung. The right atrial border is indistinct and the horizontal fissure runs from the right hilum to the 8th rib in the mid-axillary line. Most plausible explanation.
Middle lobe collapse. Widow. Cranial nerve. Rapid fatigability of the facial muscles and her chest radiograph showed mediastinal widening. Contrast enhanced CT of the chest. Which best fits? Isolated homogeneous soft tissue mass within the anterior mediastinum outlined by fat. What feature most suggests a diagnosis of idiopathic pulmonary fibrosis/usual interstitial pneumonia, UIP, rather than nonspecific interstitial pneumonia, NSIP? Honeycombing. Under. Invest. Gashin. For Sjogren's disease. HRCT. Septal thickening, bilateral diffuse ground glass shadowing and poorly defined central lobular nodules. What is the finding on lung biopsy? Lymphoid interstitial infiltrate. What appearance would be most in keeping with benign asbestos-related pleural plaque disease? Bilateral focal pleural thickening predominantly affecting the diaphragms and lower thorax. Sparing the apices, costophrenic angles and mediastinal pleura. Only a few of the plaques are calcified. Chest radiograph. Crazy paving pattern of attenuation. HRCT. Diagnosis. Alveolar proteinosis. What pattern of disease would give the best chance of a successful outcome following LRVS? Severe upper zone bullous emphysema with relatively spared lower zones. What findings are most in keeping with a parapneumonic empyema? Septated effusion with underlying consolidation on ultrasound. Biochemical/cytological. Analysis, pH 7.1, neutrophils hashtag. Road traffic accident. Pelvic, left femoral, and right humeral fracture. Petechial hemorrhages on his chest and abdomen were noted. Chest radiograph. Appears normal. Most likely diagnosis? Fat embolism. For 60K, not separating shows temporary granulomatosis. फिर more dense and soft tissue diagnosis सिलिकोसिस, ठीक है। और पैट या लेंस से बुक में एक और एम्स भी है, एपिकल लंग नोड्यूल्स होते हैं, ये भी सिलिकोसिस में आते हैं, ठीक है। ARDS जो होता है ये प्री एब्डोमिनल डिपेंडेंट एब्नॉर्मैलिटी होती है। तो फिर ये है कि जो एलिवेशन ऑफ द राइट हेमिडायफ्राम और जो है न्यूट्रोफिलिया है, तो डायग्नोसिस कंप्रेशन ऑफ पेन नर्व बाय रेज यूनिलैटरल रेज हेमिडायफ्राम अपनी डिग्रीज है, तो उसमें एक है कंप्रेशन ऑफ पेन नर्व बाय ट्यूमर। फिर जब स्कूल टीचर आ जाए बस MCQ में, फिर उसको लंग डिजीज हो तो कैपिटल ऑर्गेनाइज निमोनिया, ठीक है। बाकी ये मैं नहीं पढ़ा, बस स्कूल टीचर में याद है। जैसे एक है एयर टकर, ठीक है। ये है डायग्नोसिस है थैलामा, तो इसकी फाइंडिंग है अभी मैं एक्चुअल बात है आउटलाइन ऑफ फैक्ट, ठीक है, होमोजेनियस है। रिपेयर में फाइब्रोसिस में और या UIP में हनीकॉम्बिंग होती है, NSIP में ग्राउंड ग्लास होती है, ठीक है। N जो है कैपिटल N ग्लास का लगता है ना, 2D ग्लास में, तो बस NSIP ग्राउंड ग्लास। ये जॉगन डिजीज में हो जाता है, ड्राइनेस होती है और फिर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं, लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो जब बायोप्सी करोगे तो पॉइंट होती है। Here talk about keeping with asbestos plaque disease, bilateral focal pleural thickening, predominantly affecting diaphragm and lower thorax, sparing that origin, ठीक है। फिर ये लास्ट वाला लाइन है, only a few of the plaques are calcified। ये सारे ऑप्शन में से ये चीज़ डिफरेंट है, ये याद रखना को only a few of the plaques are calcified। ये crazy brain pattern alveolar proteinosis, ठीक है। एक और scenario, child after CML with increase LDH, उसका भी alveolar proteinosis आता है, तो MCQ आएगा अभी बाद। Best chance after successful outcome following volume reduction surgery, severe upper lobe bullous emphysema, upper lobe, ठीक है, और spared lower होता है, ये बेस्ट फिर जो होता है। वेंटिलेटर से ज़्यादा अपर लोब में होते हैं, बस ये होता है अपर लोब से इन्वॉल्व होता है।
ये इसमें हटा करो वो ऑप्शन जिसमें सेप्ट है, कंसोलिडेशन और न्यूट्रोफिल्स है, वहाँ से, ठीक है। और पीएच 7.1 न्यूट्रोफिल्स पीएच 7.1, और फिर इसमें आगे जाके और चाहे एक्शन ये आसान है कार्ड एम्बोलिज्म।